Good morning, students. Today, we are going to start with accounting standards. But before starting accounting standards, we have to finish framework for preparation and presentation of financial statements. We left with only accounting standard parts. Now we have completed 90% of your syllabus, only 10% that now we are going to start with framework for preparation and presentation of financial statements. Friends, I request you all to maintain a separate notebook, 100 pages notebook for accounting standards. Now our focus will be on revision plus past examination questions. So I will give you all summary points in writing for next 5 to 6 days because I think 26 is the last session. Now we have session on संडे मॉर्निंग में हमारा सेशन रहेगा एंड आफ्टर दैट यस आई विल जस्ट चेक इट आउट. So I have introduction to accounting standards and framework. So accounting standards part we'll take it at the end. Then first we'll start with this chapter number 2, framework and preparation and presentation of financial statements. And then we have 5 accounting standards. So 5 accounting standards, 2, 10, 11, 12, 16. Okay, so 5 days for 5 accounting standards. ठीक है, काफी हो जाएंगे. But my request to all of you to watch previous sessions for detailed theory. And in this batch, we are going to take एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा का पूरा समरी. तो जितना भी होगा मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कवर करवाऊंगा. सो डोंट वरी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मिनिमम 10 to 15 मार्क्स वेटेज, 20 मार्क्स यू कैन टेल आउट. तो यहाँ पे 20 मार्क्स का वेटेज है फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. सो डोंट स्किप अ सिंगल क्वेश्चन इन ऑप्शन फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू ऑल to maintain 100 pages notebook separately. If not possible, at least divide your notebook in 2 parts. One is for accounting standard and one is for your regular book. Okay. So accounting standard summary charts are very, very important. So maintain it accordingly. Chalo. So today we are going to start with framework of accounting standards. So first one, in framework, first question you can see, what are fundamental accounting assumptions? Now see, what are financial statements? First, I will tell you what are financial statements. So write down. You want main questions in writing or should I show you only presentation? Yes, beta. Should I give you summary points in writing or you will write it later? Yes, tell me it in the comment section. आपको लिखना है या मैं समरी पॉइंट्स बाद में दे दूं? चलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. ज्ञानेश, चलो जल्दी से आ जाओ सब बच्चे. डोंट मिस अ सिंगल सेशन. चलो जल्दी से बताओ इन राइटिंग. चलो ठीक है. यस बेटा, क्वेश्चन 1 कंपलसरी है राइटिंग. चलो लिखो. Number 1, financial statements. So what are financial statements? A, balance sheet. To know financial position. To know financial position. Second one is profit and loss account. Second one is profit and loss account. Performance statement. Performance statement. Third one, cash flow statement. Cash flow statement.
operating, investing, and financing activities. D, notes to accounts. E, statement of changes in equity. Yes. So these are financial statements. And this chapter is related to framework of financial statement, means how these financial statements are presented. So this is a chapter which is related to preparation and framework. Okay. So preparation and framework, framework for preparation and presentation of financial statements. So we are going to understand what is framework, how your financial statements are presented to your shareholders. So that we are going to see it in this chapter. So friends, this chapter is nothing but it's a financial statements, balance sheet, profit and loss account, cash flow statement, notes to accounts, and statement of changes in equity. यस बेटा, ये मैं रियल लाइफ का आपको बता रहा हूं बेटा. अब्दुल, चलिए. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. नाउ सेकंड क्वेश्चन, while बेटा understand, while preparing, what are fundamental assumption, fundamental accounting assumption? Remember the word gas, but here gas is not GAS, it is GAC. G for going concern, B, accrual, C, consistency. So write down going concern, accrual, consistency. Remember, there are two words. There are two words. One word is foreseeable future. Okay, write down foreseeable future. And second one, curtail, scale of operation. So these two words you have to write whenever fundamental assumption word is there. I will tell you exactly lines, foreseeable future and curtail. Always remember while answering your theory questions, some words are important and you have to point out these words. Okay. So these words I'm going to give it in the writing. Okay. Accrual concept. Recognition as transactions occur. Recognitions as transactions occur. Write down. Means payable, receivable, received in advance, and prepaid. All these are accrual concepts. Consistency. Year after year, year after year,
similar accounting policies. Similar accounting policies. Okay, now let's understand these wordings. So fundamental assumptions, I have given you these wordings, beta. Important points, important words. Okay, so let's see. Going concern, financial statements are prepared on the assumption that enterprise will continue for the foreseeable future, and neither there is intention nor there is need to materiality the curtail the scale of operation. So there is no need टू कर्टेल, कर्टेल मतलब कम करना. ओके, कि हम लोग कोई भी ऑपरेशन बंद करने के कगार पे नहीं है. ये जो एक्सप्लेन किया जाता है ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में है. सो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि भाई आपका बिजनेस सालों के साल चलता, सॉरी, आपका बिजनेस बहुत साल तक चलेगा, कभी भी आपका इंटेंशन नहीं है कि बिजनेस बंद करने का. Financial statements are prepared on the going concern basis. Among other things, need to be sufficiently retention of profit to replace the asset consumed in operation and for making adequate provision for settlement of its liabilities. Okay. तो बिजनेस में एसेट्स भी रहेंगे और लाइबिलिटीज भी सेटल करनी है इन फ्यूचर. इफ एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द डिफरेंट बेसिस, मतलब रियलाइजेबल वैल्यू, इट हैज टू बी डिस्क्लोज. सो व्हेन यू आर going to sell your business, when you are going to sell your business, you will show all assets and liabilities at their net realizable value. Now what is net realizable value? We are going to see this. तो रुकिए, सबर कीजिए. We are going to solve one problem for net realizable value, so don't worry. Accrual. Accrual concept, transactions are recognized as and when they occur, whether or not cash or cash equivalent is received or paid. Okay, so cash is paid or received is not important, but transaction occur is important. बस इतना याद रखो. So this is the word. And consistency, using same principle policies for similar transaction in all accounting periods, and you can change this. Now this is also important. Change is required if required by law, statute matlab law, by accounting standard, and for better presentation. So three important points: for better presentation, for change in law, then you can change these policies. So accounting policies you have to change if it is required by law, if it is required by accounting standards, or for better presentation. So friends, these are three fundamental basic assumptions. So please write it in the comment section. What are fundamental assumptions? चलो जल्दी से लिख दीजिए. What are fundamental assumption? This is CA foundation unit. Curtail the operation का meaning होता है राहुल जी to reduce your operation. Curtail means stop करना, and reduce करना. Curtail का मतलब होता है कि उसको cut करना. Curtail means. Yes. चलिए. Very good. Everyone has written going concern, accrual, and consistency. Okay. Chalo. So first question over.
Second question. Yes, beta, 5 marks question is there. Second question. Second question. एक ही मिनट बेटा, ये फाइल अपलोड किया है क्या मैंने? ऑल दिस क्वेश्चंस फाइल अपलोड किया है क्या? लेट्स चेक इट आउट. Summarize the balance sheet of cloth traders as on 31st March 2017 is given below. Proprietors capital, P&L 10% loan, sundry creditors, PPE, closing stock, debtors, deferred expenses, and cash and bank. Now, here, not assuming going concern. So you have to prepare this profit and loss account, assuming there is no going concern concept. Yes, can you tell me upload है क्या नहीं है ये? Okay. Okay. Already uploaded. Chalo. Very good. Already uploaded. So remaining life of the fixed asset is 8 years. And the pattern use of this asset is E1. The net realizable value is 3,25,000. So friends, for 5 marks, I don't know why I say ask this question for 5 marks. So beta, your asset, you are not going to show it at 3,60,000, but you will show this at net realizable value 3,25,000. 3,25,000. So beta, what is the depreciation? So difference you will take it in P&L. So difference is 35,000. ये difference है 35,000. You will consider it in P&L debit side. Next, purchases and sales. Okay, so P&L के debit में आएगा debit credit. So debit में 22,50,000 and credit में sales will be 27,50,000. Very easy. The cost and net realizable value 2 lakhs and 2,50,000. So I will record my closing stock at 2,50,000. So for me, 2,50,000 closing stock is important. Balance sheet asset side and yes, beta, balance sheet के asset side पे I will record it. Expenses for the year P&L के debit में. Deferred expenses. Now there is no concept of deferred. So all deferred expenses, I will record it in NRV 0. So difference, I will record it in P&L debit side. So 0 will be deferred expenses. Sundry debtors 1,50,000.
Sundry debtors 1,50,000. Okay. So, and after that, 5,000 and 25,000 are also doubtful. So I will record this at 1,30,000 and P&L ke debit mein, sorry, here you won't consider 1 lakh because it's a sundry data. So 1,30,000 minus 1,50,000 minus 30,000. So 1,20,000. You are going to record it at, and P&L के debit में you will record 30,000, not 1 lakh rupees. बेटा 1 lakh is of last year. ये last year का है. Creditors 75,000 less 10% discount. So 75,000 minus 10%. So creditors you will record 67,500 and difference will be in P&L. P&L के debit में credit में P&L credit 7,500. Cash and cash balance 4,22,000 and early payment loan का penalty for early payment 2,10,000 plus 25,000. So 2,35,000 and P&L के debit में penalty you are going to write it at 25,000. Chalo, how to present the answer? Yes, write down answer. See, write down the answer for 5 marks. कौन सा एग्जाम था? May 2019. Write down May 2019. Profit and loss account. Particulars rupees. Particulars rupees. And then after 8 lines, balance sheet. As on 31st March 2018. P&L account 2017-18. Balance sheet as on 31st March 18. Liability rupees. Asset rupees. Chalo. Start. First, I will write balance sheet as it is, capital account. Balance sheet as it is, capital account. P&L account. 10% loan. Creditors. Asset side, property, plant and equipment. Inventory. Debtors. Cash and bank. After one line. Don't write deferred expenses. Chalo, start. So first I have fill up all balance sheet items in T format only. PPE, I will record it at 3,25,000. So
First thing, yes, to opening stock. To opening stock last year का बेटा closing stock 1,50,000. Then do purchases and buy sales. That I will write it later. And buy closing stock. Now, to depreciation. To depreciation, how much? From 360 to 325. So 35,000. Depreciation 35. Depreciation 35,000. Purchases 22 lakh 50 and 27 lakh 50. 22 lakh 50,000. 27 lakh 50,000. Closing stock 2,50,000. And second effect in inventory 2,50,000. Expenses 78,000. To expenses 78,000. Then debtors beta. Debtors 1,50,000 minus 1,50,000 minus 25,000. 1,25,000 and to provision for Didi to RDD 30,000. Sorry, इधर कितना 1 lakh? So not 25. Minus 30,000. Sorry. Minus 30,000. So this is 1,20,000. Creditors 75,000 minus 7,500. 67,500. And credit side पे by provision on creditors 7,500. Then cash and bank balance 4,22,000. And last one loan. But a loan 25,000 penalty you are going to add. So 2,10,000 plus 25,000. 2,35,000. And what is capital balance? 3 lakhs. And to penalty 25,000. Calculate net profit beta. So net profit 30 lakh 7,500 minus 150 minus 2,250 minus 78 minus 25 minus 35 minus 30. Hmm. 150, 22 lakh 50, 78, 25 penalty, 35, 30. Oh, एक रह गया, sorry, एक रह गया
टू डेफर्ड टैक्स, डेफर्ड एक्सपेंस, डेफर्ड कॉस्ट एक रहेगा या सिर्फ टू डेफर्ड कॉस्ट एक्सपेंडिचर 24,000 टू डेफर्ड एक्सपेंडिचर 24,000 डेफर्ड कॉस्ट कितना है, सॉरी 50 है, डेफर्ड कॉस्ट 50 है 50, सो नेट प्रॉफिट इज 3,89,500, 3,89,500, and here also P&L is a balancing figure, star mark. P&L is a balancing figure, star mark. 325 plus 250 plus 120 plus 422, 11,17,000. So balancing figure 5,14,500. Five lakh 14,500, or you can consider 1,25,000 opening plus current year profit 389,500. So 5 marks question. Yes. No beta. Abdul, here we are following NRV concept. Here we are following NRV concept. Why? Because going concern concept not affected. Going concern concept not affected. So here we have to follow profit and loss account and balance sheet in which concept beta? Net realizable value concept. कौन सी concept follow करेंगे? Net realizable value concept. Yes. I will give you before break beta one more question. So May November 2020 is your homework नहीं बेटा, classwork only. Yes, but थोड़ा सा सब्र कीजिए. Next one. Yes. So third question. November 20 before break we are going to take it. Okay. So break में आप लोग solve करोगे before break and I will tell you the answer. तो अभी मत सॉल्व करो, सेम क्वेश्चन है, ब्रेक में सॉल्व करना. यस, अभी का इजी था क्वेश्चन. गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट नॉट फॉलोड मींस नेट रियलाइजेबल वैल्यू. यस, अभी का क्वेश्चन इजी था. ट्रेडिंग P&L सेपरेटली नहीं बनाया तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम बेटा मोहम्मद. चलो आगे जाना है. नेक्स्ट वन, November 2020, क्वेश्चन 5. क्वेश्चन 4, बेटा इट्स फॉल्स.
certain fundamental assumptions we have to assume. So we do not have to record it separately. If they are not followed, now see, now fundamental assumption of going concern is not followed. Therefore, we are maintaining this at net realizable value. So see, we are preparing our P&L and balance sheet not at cost, but we are preparing it at, yes beta, हम लोग इसको फॉलो कर रहे, फंडामेंटल एजम्पशन नहीं फॉलो किया तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड दिस. ओके, सो वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड दिस इफ we are not following fundamental assumption. So very, very important point. If you are not following fundamental assumption, then you are going to maintain your assets and liabilities at net realizable value. So this is 5 marks question. Next question, and fundamental assumptions assume. So if you are not writing it separately, it means you are following this fundamental assumption. You are following this fundamental assumption if nothing is given in the फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. नेक्स्ट वन, नवंबर 2020 को क्वेश्चन आया था, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो राइट डाउन आंसर, क्वेश्चन 5 का आंसर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स. क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स. नंबर 1, understandable. Number 2, relevance. Number 3, materiality. Number 4, reliability. Number 5, neutrality. Number 6, completeness. Number 7, substance over form. Number 8, comparability. So 8 beta 5 marks question. 5 marks question है understandability, relevance, materiality, reliability, neutrality, completeness, substance over form. And comparability. Now understand. So these are characteristics. So your financial statements must have understandability. Now what is understandability? Yes, अभी theory में आ जाओ. थोड़ा theory question है. The financial statement presented an information. तो बेटा इसमें मैंने 4 ही दिए आपको. सो इन एग्जाम मिनिमम 4 तो भी आपको याद आने चाहिए. अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलेवेंस, रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी. रेडिली अंडरस्टैंडेबल. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे होने चाहिए? अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए. रेलेवेंस मतलब क्या? ओनली रेलेवेंट थिंग्स विच आर influence the economic decision by the user. See, relevance means you should present such data in your financial statement in which your investor or better reader, he can easily influence for financial decision. मतलब लॉस होगा तो वो आपने स्पेसिफिकली लिखना चाहिए, प्रॉफिट भी लिखना चाहिए. तो रिलायबल इंफॉर्मेशन एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. रिलेवेंट मतलब रिलेटेड एंड बेटा रिलायबल मतलब उसके ऊपर ट्रस्ट रख सकते हो. रिलायबल मतलब उसमें एरर्स कुछ नहीं रहेंगे. यस, मटेरियल एरर
should not be there. Okay. And last one, comparability. This theory I will upload. Don't worry. So comparability means you can easily compare inter-firm and intra-firm comparison is possible. Inter-firm and intra-firm comparison ये possible होगा. ऐसे आपके financial statements चाहिए. Understandability, reliability, relevance, and comparability. So minimum 4 marks question, at least 4 you have to write. These 4 are important: understandability, relevance, reliable, and comparability. Remaining you can write it if you need. Chalo. न्यूट्रलिटी रिलायबिलिटी में से आएगा. सो रिलायबिलिटी में से न्यूट्रलिटी आएगा. इतना याद रखो. Yes, over. Next question. Question 6. One of the characteristic is neutrality. Yes, we agreed with this. Do you agree? And neutrality means what, beta? What you have to write? Reliable. न्यूट्रलिटी मीन्स आपने किसी की साइड नहीं लेनी चाहिए, न्यूट्रल होने चाहिए. कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में कुछ लिखना नहीं चाहिए. जो भी हकीकत है ऑर्गेनाइजेशन का वही होना चाहिए. इसको बोलते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यू आर ऑडिटर एंड अकाउंटेंट. तो अकाउंटेंट और ऑडिटर ने कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम किसी की साइड नहीं लेनी चाहिए. ठीक है. अभी घर में झगड़ा हुआ मेरे सास का और मेरे वाइफ का. सपोज इफ देयर इज अ फाइट बिटवीन माय मदर इन लॉ एंड माय वाइफ, तो बेटा मैंने न्यूट्रल रहना चाहिए. मैंने न्यूट्रल मतलब मैंने किसी की साइड नहीं लेनी चाहिए ना. बेटा कोई भी बराबर रहे ना रहे, मैंने मेरा ओपिनियन सिर्फ देना चाहिए. भाई ऐसा है. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे होते हैं? इट्स न्यूट्रल. ओके. फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं. तो इधर मैंने किसी की साइड नहीं लेनी है, ना इन्वेस्टर की ना कंपनी की. तो सास मतलब क्या हुआ बेटा? कंपनी. और इन्वेस्टर मतलब क्या हुआ? वाइफ. ओके. सो आई शुड बी न्यूट्रल इन दिस केस. तो न्यूट्रलिटी. यस. और न्यूट्रलिटी मतलब यस. हाँ, थैंक यू बेटा ज्ञानेश. बेस्ट एग्जाम्पल. ओके. सो फ्री फ्रॉम बायस डिसीजन. आपने किसी के बारे में बायस नहीं होना है. ठीक है. मेन एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलरेडी एक्सप्लेन यू. Elements of financial statements already explained. Yes. Now December 21 question. But I will tell you one important point in this. Mrs. A is showing opening balance of equity, liability, and asset. So what is the equation? Asset is equal to, or here, serial number, particulars, asset, liability, plus capital. Now, please finish this. Opening balance. ओपनिंग बैलेंस 10 लाख. लाइबिलिटीज 6 lakhs plus 4 lakhs. Now received 20% dividend on 10,000 shares of 10 each. So beta 1 lakh pay 20% means 20,000. So dividend received
डिविडेंड रिसीव्ड मतलब बेटा कैश बैलेंस इंक्रीज होगा, एसेट इंक्रीज, एंड डिविडेंड इज योर प्रॉफिट एंड लॉस आइटम, एंड पी एंड एल अफेक्ट्स योर कैपिटल. So capital increased by 20,000. Capital increased by 20,000. So dividend received, asset increase, and what is the entry? Cash to dividend. So dividend capital increase होगा, cash asset increase होगा. 70,000 paid to creditors for settlement of 90,000. तो 20,000 का profit है. So creditors paid less 70,000. Liability reduced by 90,000, and your faida profit will be 20,000. So profit will be added. So minus 90 plus 20 is minus 70. Roman 4. Salary spending 20,000. Salary spending 20,000. So what salary? Payable. Yes, beta, salary payable is your kharcha. Kharcha will reduce your capital 20,000, and liability increase by 20,000. Liability increase by 20,000. And kharcha reduce your capital. Drawings 20,000. Drawings, cash reduce 20,000 and capital reduce 20,000. So see your capital. Now what is your asset? Total 1,000 plus 20 minus 70 minus 20, 9,30,000. 60 plus 20. So this is less 10,000. मैंने उल्टा लिखा. लाइबिलिटी 4 लाख है, सॉरी, एंड कैपिटल 6 लाख है. उल्टा लिखा है. लाइबिलिटी 4 लाख, लाइबिलिटी 4 लाख एंड कैपिटल 6 लाख. लाइबिलिटीज 4 लाख, सॉरी बेटा, लाइबिलिटी 4 लाख है. 400 माइनस 90 प्लस 20, 3,30,000. पहला इक्वेशन थोड़ा सा गलत हो गया था. 330 और ये चाहिए 6 लाख. लेट्स सी वेदर यू आर गेटिंग 6 लाख. 20 plus 20 plus 20 minus 20 minus 20. Yes, I'm getting 6 lakhs without calci. So this is how you will form your equation, and 5 mark का question था. This is for 5 marks. Very easy question. Before taking a break, you are going to solve in 10 minutes this question, November 20 question. And we are going to meet at beta 8:10. 8:10 को हम लोग मिलेंगे. So ये 10 मिनट का क्वेश्चन एंड 10 मिनट का आपका ब्रेक. सो आंसर आई विल टेल यू. आंसर मैं बता देता हूं. दिस इज ऑलरेडी अपलोडेड. सो 10 मिनट में सॉल्व करना लाइक एग्जाम. बेटा दिस इज ऑलरेडी अपलोडेड. और आपका आंसर आई एम नॉट गोइंग टू शो यू. यस, आंसर मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूं. सो आंसर, नेट प्रॉफिट 35,600 and balance sheet total 3,71,200. Balance sheet total and net profit 35,600. चलो, सो मैं अभी आपको मिलता हूं 8:10 को. 10 मिनट का ब्रेक एंड 10 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, ये क्वेश्चन आप लोग नवंबर 20 का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. नवंबर 20 का क्वेश्चन, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सी. यस बेटा, टिल नाउ व्हाट वी हैव अंडरस्टूड: fundamental assumptions, going concern concept, qualitative characteristics, and equation. Equation: asset is equal to liability plus capital. So we covered 4 questions. Yes, 4 questions हमने कवर किए. चलो ठीक है. चलो जल्दी से टेक अ ब्रेक. और ब्रेक में ये करना है, 20 मिनट है पर 10 मिनट का सॉल्विंग, 10 मिनट का ब्रेक. चलो लीजिए जल्दी से. यस, ब्रेक ले लीजिए.
I hope everyone got the same answer for question number. Yes, beta, which question? 3. Yes. You got the same answer, beta? Yes. Chaliye. So let's move to question number 9. Question number 9. Measurement basis. So next question is beta measurement basis. Chalo. Measurement basis. What is meant by measurement? So question number 9 and question number 10 ये साथ में सॉल्व करेंगे. राइट डाउन क्वेश्चन 9 and question 10 answers. Meaning of measurement. Meaning of. Now what are measurement basis? Measurement means determine money value. So determining money value at which an element can be recognized in balance sheet and P&L. So it is finding out the money value. It is it is finding money value at which you are going to record your P&L and balance sheet item. In balance sheet, you have assets and liabilities. And in P&L, you have expenses and incomes. Okay, so to find out the value of asset liabilities, income expenses in terms of money is called as measurement basis. Now, second one, different basis. Different basis is divided in 4 parts. This is actually foundation question. ओके फाउंडेशन क्वेश्चन है ये. चलो हिस्टोरिकल कॉस्ट करंट कॉस्ट realizable value and last one is present value. How many bases are there, beta? There are total 4 bases. Historical cost, current cost, realizable value and present value. Now what is historical cost? In simple language, it is acquisition price. Acquisition price. Current cost means today's asset or liabilities value
if acquired currently, if acquired currently, acquired मतलब परचेस आज किया तो. I will give you one example so it will be very easy for you. Current cost. Selling currently means same value. If selling currently, it is called as realizable. Realizable मतलब बेचने का. And current means acquisition. If future cash inflows or cash flows are discounted, बेटा फ्यूचर कैश फ्लोज आर डिस्काउंटेड, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज प्रेजेंट वैल्यू. इट इज कॉल्ड एज प्रेजेंट वैल्यू. So beta, you have different capitals, basis for measurement, historical cost, current cost, realizable value, present value. Example, purchase of land. In 2003, I purchased it at 40 lakhs. In 2022, market price selling 4 crores and acquisition, if same plot acquisition 6 crores or sorry 3.5 crore, नहीं तो 4 crore 20 lakhs, 4 crore 20 lakhs, and cash generated present value is equal to 3 crore 50 lakhs. So beta, this is called as historical cost. This is called as realizable value. This is current cost and this is present value. I hope you got the concept. ठीक है? Historical cost, selling किया तो realizable, historical cost, I hope you understood it. मोहम्मद वरा का आंसर क्वेश्चन क्या है? 1 और 13 सिलेबस में नहीं है क्या? बेटा 1 मतलब फंडामेंटल एजम्पशन, that is same topic with which we are doing it now, and 13 number is investment chapter. Yes, I hope you are writing this all answers. चलो ओवर बोल दीजिए ओवर करके, so I will move to next question. Next one. Yes beta, next question. 9, 10 completed. 11 I am going to do it.
एंड 12th इज योर बेटा क्लास वर्क, तुरंत आपको करना है. चलो बताइए. फर्स्ट रीड दिस क्वेश्चन. आंसर द फॉलोइंग. एक्सप्लेन हाउ फाइनेंशियल कैपिटल इज मेंटेन at historical cost. Kishore started business with 15 lakhs. 15 lakhs, 75,000 units into 20 rupees. During the financial year ended, he sold entire shares at rupees 30. In order to maintain the capital intact, calculate maximum amount which can be withdrawn by Kishore in year end. बेटा इससे सिंपल क्वेश्चन तो कुछ आ ही नहीं सकता. सो यस, राइट डाउन maximum amount. Exam presentation. Now this is question number beta 11. My notes, question 11. Yes beta, do you think कि इस बार की बैच में we have taken past examination questions which are important one? Okay. Maximum amount that can be withdrawn by Kishore 2019-20. Financial capital is maintained at historical cost. Financial capital is maintained at historical cost. Serial number, particulars, computation, rupees. Roman 1, closing equity. Closing equity 75,000 into rupees 30. 22,50,000. Second one, opening equity 75,000 into rupees 20. 10 lakhs. Roman 3, permissible drawings 1 minus 2. 7,50,000. Therefore, financial capital is maintained at rupees 15 lakhs. So maximum drawings कितना allowed है? देखो मेरे पास 75,000 into 30 means I have 22,50,000 as a closing equity, but my opening equity is only 15 lakhs. So now I can withdraw my money up to 7,50,000. So my opening equity can be maintained. Okay. So remember, you do not have to retain any profit.
If return profit is zero और रिटर्न प्रॉफिट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो होगा तो यू मेंटेन योर कैपिटल. ठीक है. तो इतना याद रखिए. चलो, नाउ आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जांपल. चलो, नाउ यू ओनली. सो फाइनेंस कैपिटल इज टू बी फाइनेंशियल कैपिटल इज मेंटेन एट 15 लाख. सो मैक्सिमम ड्रॉइंग्स कितना अलाउड है? सी 75,000 इंटू 30 ये अभी का प्राइस है. ओके, इजी है. फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस. फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस समझ में आया सबको? चलो, सॉल्व सेकंड क्वेश्चन. चलो, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. जुलाई 2021, 5 मार्क्स. चलो बेटा करो. बेटा ट्रिकी है बट इजी है.
Yes. Now, how to present the answer? Write down. Write down the answer. See, now you do not have any closing equity. Yes, beta. Now, closing equity is closing equity at current cost. At current cost. So, physical capital maintenance at current cost. Physical, what is the heading? Physical capital maintenance at current cost. Physical capital maintenance at current cost. 6,000 units you presented at rupees 30 rupees per unit. Okay. Minus you withdrawn 60,000. So now your closing equity is equal to 1,20,000. Is equal to 1,20,000. Current, first understand it, current equity cost 6,000 units into 25, 1,50,000. Loss resulting in non-maintenance of capital. So what is your loss? 30,000. So here your drawings must be restricted. Drawings restricted at rupees 30,000. Drawings must be restricted at rupees 30,000. So closing equity, current equity, and loss resulting. Okay. If trader has not withdrawn any amount, suppose if trader not withdraws amount, then retained profit is equal to 1,80,000. See, not withdrawn means this is 1,80,000 minus current is 1,50,000, 30,000. So retained profit 30,000. Chalo, write down boy, beta. So what is the question? If physical capital is maintained at current cost, if physical capital, you can write the answer, physical capital maintained at current cost. Question number 10, historical cost. Question number, sorry, ये 12 था ना? हाँ, 11 historical cost and 12 current cost. Write down answer, beta. Write down answer properly. So closing equity कितनी है? 6,000 into 30 minus 60,000 you withdrawn ना, और करंट कॉस्ट कितना है? 1,50,000. So you will be in loss. तो आपने क्या करना चाहिए?
ड्राइंग्स को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए. ड्राइंग्स को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए. राइट डाउन ओवर आफ्टर राइटिंग द आंसर. आफ्टर राइटिंग द आंसर, राइट डाउन ओवर. वेरी गुड बेटा असलम. ओके, नाउ अंडरस्टूड सर. ओके, वेरी गुड. सो बेटा दीज आर 5 5 मार्क्स क्वेश्चन और वेरी इजी क्वेश्चंस. ये ऑप्शन में रखते पूरे बच्चे. बेटा आपको ऑप्शन में नहीं रखना है, ये पूरी इंडिया को ऑप्शन में रखने दो, हमें ऑप्शन में नहीं रखना है. ठीक है, बिकॉज दिस 5 मार्क्स बेटा काउंट्स. इतने सिंपल क्वेश्चंस इट काउंट्स. ओके, एंड दिस विल हेल्प यू टू increase your marks from 40 to 60. ये छोटे छोटे क्वेश्चन, all these small questions. बेटा normally I have seen students are not doing this question sincerely. Okay, last batch में भी I am telling you कि मुझे भी टाइम नहीं मिलता था. So this time we continued only with important questions. So इस बैच में क्या है, इस बैच में मुझे स्कोर एक्सपेक्ट है आपसे. आप पिछले बैचेस के मेरे लेक्चर्स रेफर करो. फॉर थ्योरी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आई हैव टेकन मैक्सिमम इन दिस बैच. तो ये बैच का रिजल्ट मुझे एक्सपेक्टेड है. पिछले बैचेस में होता क्या था कि कॉन्सेप्ट्स में करवाता था, बट क्वेश्चन आंसर्स इतने नहीं हो पाते थे. पर ये बैच में बेटा बहुत सारा किया, मतलब ऑलमोस्ट वी हैव डन ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ बेटा स्कैनर. हाँ, वेरी गुड बेटा Nanesh. So we have completed with chapter number 2. Now we are going to start with overview of accounting standards. अरे ओवरव्यू का भी क्वेश्चंस अपलोड कर दिया है क्या? चेक करो एक बार. One more chapter. I know today is a theory session. बेटा प्लीज वॉच माय S2 रिकॉर्डेड लेक्चर्स. संडे को हम लोग S2 से शुरू करेंगे. सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग संडे तक पूरा का पूरा कंप्लीट करके आओगे. सो नाउ आई एम स्टार्टिंग विथ ओवरव्यू of accounting standards. Chalo. Now we have completed chapter number 2. Chapter number 3, unit 1. Chalo. Understand? Chapter 3, unit 1.
overview of accounting standards. Write down chapter 3, unit 1, overview of accounting standards. Write down first point, ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में लिखो नंबर 1. यस बेटा, डोंट स्टार्ट विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ओवरव्यू कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसको मैंडेटरी है. थैंक यू हो रहा है भाई. Accounting standards are mandatory to all companies. Section 133. Write down. हैंग हो रहा है, रुको. राइट डाउन सेक्शन 133. एज पर सेक्शन 133, सेंट्रल गवर्नमेंट यस बेटा, एज पर सेक्शन 133. अभी वो नहीं लिखूंगा मैं, एज कंपनीज एक्ट 2013 वगैरह. सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब accounting standards recommended by ICI. Where A's are not followed, company must disclose 3 points beta, 3 points: deviation from AS, reason of deviation, and last one, financial effect due to deviation. So 3 points are mandatory. Level 1, 2, sorry. Entities are divided in 2 parts: non-corporate and corporate. Non-corporate beta divided in 3 parts: level 1, 2, 3. Level 1 beta large size. Level 2 medium size.
एंड बेटा लेवल 3 स्मॉल साइज. एंड 4 माइक्रो. Here SMEs and non-SMEs. SME and non-SME. SME small and medium enterprises, and small non-SMEs non-small and medium enterprises. Okay. Criteria for level 1. Write down. Criteria for level 1. So beta यहाँ पे accounting standards are mandatory to all enterprises. But suppose if you are not following accounting standards, then you have to identify deviation, then reasons for deviation, and financial effect due to deviation. That you have to write it. Okay. So all these important points ध्यान में रखना. All these are important points. Yes, have you written? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 संडे मॉर्निंग तक कंप्लीट कीजिए. टुडे 9:15 को मैं आपको छोड़ दूंगा, तो आपके पास पूरा टाइम रहेगा कंप्लीट AS2, and I will take examination questions, study material questions, and some part of theory, which I think this is relevant theory for your exams, so that I will cover, and revisions of AS2. So we have one day, one accounting standards for past questions. Okay, so detail में explanation करने से अच्छा we will focus on maximum questions, and I think you will also focus on that part, maximum questions. But try to finish S2 from past sessions. Okay, possible होगा तो देख लीजिए. Yes, anyone who has idea? Yes, I hope you are writing same question answers technique. See beta, same technique for other subjects, for law, income tax. You are also preparing 100 pages का notebook for your last day revision. तो और जितनी मेहनत खुद से करोगे, रेडीमेड नोट्स कुछ फायदे के नहीं है. Those I always watch this बेटा, बहुत से बच्चे क्या करते, उनको रेडीमेड चाहिए, तो बहुत से क्लासेस वाले क्या करते, रेडीमेड. बेटा जो मजा खुद से नोट्स निकालने में ना, वो रेडीमेड में कभी नहीं आएगा. जो खाना रोटी सब्जी देगा, वो बेटा मैगी कभी नहीं देगा, इतना याद रखिए. जो रेडीमेड होता है ना, उसके बेटा डिसएडवांटेजेस भी उतने ही है. हाँ, फायदे होंगे, मैं नहीं बोल रहा हूं, आपका टाइम बचेगा, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई हम लोगों को ये नोट्स खुद से लिखो ना, थोड़े बहुत एटलीस्ट खुद के राइटिंग में लिखो. राइटिंग में लिखो, ठीक है, आप किसी के नोट्स ले लीजिए, पर खुद के राइटिंग में कुछ तो लिखो पॉइंट्स. पर नहीं करते, स्टूडेंट्स को सब कुछ रेडीमेड चाहिए, फिर रिजल्ट भी वैसे ही आते हैं. ये कॉम्बिनेशन की बैच बहुत अच्छी गई मेरी, क्योंकि मेरे होप्स जो थे ना, मुझे आज तक लगता ही था कि पास्ट में क्या होता था, सिर्फ मैं पढ़ाता था, फिर एग्जाम क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो पाते थे. पर ये बैच बहुत अच्छा गया मेरा, कि पास्ट क्वेश्चंस भी हुए, आप लोगों ने भी मेहनत, मतलब जो बच्चों ने अटेंड किया, जो नहीं कर रहे वो जाने दो, मैं तो उनको कुछ बोलता नहीं. पर दिस बैच विल गिव यू रिजल्ट्स. अभी तक के बैचेस में क्या होता था, ओनली स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस, पर ये बैच में आपको रिजल्ट मिलने वाला है. याद रखो 60+ मेरा फॉलो किया ना टेक्निक, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बैचेस, आपको 60+ पकड़ के ही चलना, 100% मिलने वाले, कुछ भी होने दो. चलिए, और भाई बेटा मेरा एक्सपीरियंस जितना बात करता है ना,
कोई जल्दी आपको बताएगा नहीं, बिकॉज आई एम अ फैकल्टी. Each and every question I covered it from study material. Normally I have seen many faculties, they won't focus on study material question, they take only easy questions. पर इस बैच में आपको रिजल्ट मिलेगा. यस. चलिए. नाउ criteria for level 1. Yes, anyone who has idea? Criteria for level 1. Number 1, I am giving you only short points. Securities listed on stock exchange. Securities listed on stock exchange. Number 2, banks, cooperative societies, financial institutions, and insurance business. Number 3, turnover greater than 250 crores. 250 crores का टर्नओवर होगा तो. एंड बोरोइंग, दीज आर लास्ट डे रिवीजन नोट्स है बेटा, तो ये शॉर्ट में रहेंगे. बोरोइंग्स greater than 50 crores. And number 5, holding and subsidiary above. Holding and subsidiary above companies. Okay. Criteria for level 1 we have finished. Criteria for level 1. Small and medium enterprises beta, SMEs or corporation. Okay beta, small and medium enterprises. Kavita ji. Yes, what is level 2? Where you will get these answers beta? I will show you. Yes beta, level 2. Overview of accounting standards. So what are level 1, level 2? Yes beta, please check level 2 from study material. जल्दी से check कीजिए study material में से. एक सेकंड डाउनलोड कर लेता हूं. मुझे तो कभी कभी ये बात की शर्म आती है कि कितने सारे स्टूडेंट्स इंडिया में ऐसे हैं कि वो लोग देखना भी नहीं चाहते कि स्टडी मटेरियल में क्या दिया है, और इधर उधर का इतना सारा करते और मेन तुम्हारा स्टडी मटेरियल ही नहीं करते. ठीक है.
You can check applicability of AS. Yes, please check the answer. Level 2, now you can write it. Yes, level 2 लिखो. Turnover greater than 50 crores but less than 250 crores. So write down level 2. But less than 250 crores. So turnover 50 करोड़ से ज्यादा but less than 250 crores. करेक्ट है? And what about borrowings? Borrowings are more than 10 crores, where you will get the answer on page 3.8. Borrowings borrowings 10 crore से ज्यादा but less than 50 crores. And holding and subsidiary of the. Okay. And level 3, other than this. Level 3, level 3, turnover 10 करोड़ से ज्यादा but less than 50 crores, ये लिमिट. Borrowings greater than 2 crores and holding and subsidiary. Holding and subsidiary. Holding and subsidiary. Over beta, over. Level 4. Level 4, which are not level 1, 2, and 3. Yes, हो गया क्या लिख के? But now applicability and non-applicability, this chart you can do. AS1 is applicable to all, 2 is applicable to all. But now this is better very, now I say ask this question, तो मैं ये बोलूंगा कि very complicated one. नहीं पूछना चाहिए कि which accounting standard is applicable to which level. So if you ask me relaxations और ये बहुत मुश्किल है याद रखना. तो मैं इतना ही चाहता हूं कि ठीक है, यदि आपने ये ऑप्शन में भी छोड़ा तो भी अभी इट्स ओके कि लेवल 1 किसको एप्लीकेबल है, बिकॉज ह्यूज रिलैक्सेशन आर देयर और ये किसी को पॉसिबल ही नहीं है याद रखना. मतलब याद रखने के लिए याद रख सकते हो मेरिट रैंकर्स, पर आई वोंट सजेस्ट यू टू रीड ऑल दिस थियोरीज कि किसका एप्लीकेबिलिटी है और किसका नॉन एप्लीकेबिलिटी. तो जितना मैंने लिख के दिया उतना करो. लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, and better there are some accounting standards which are applicable. Level 1, all accounting standards are applicable. See, all accounting standards are applicable to level 1, but level 2, level 3 में some relaxations are there. मतलब part of the accounting standard is applicable. अभी वो याद रखना बेटा हाईली इम्पॉसिबल है, हाईली इम्पॉसिबल है.
Okay. Now remember, ठीक है, सो यू अंडरस्टूड लेवल 1 को सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 2 को some accounting standards are not applicable, there are relaxations, level 3 को और relaxations, level 4 को भी और relaxations. So see, जैसे जैसे level 2, level 3, level 4 होगा तो accounting standards कम होते जाएंगे, your accounting standard will get reduced. Applicability means all accounting standards are not applicable, but level 1 all accounting standards are applicable. And now you have Ind AS. Now you have Ind AS. Okay. So accounting standards applicability याद रखना, ठीक है, level 1, level 2, level 3 you can understand, but which standards are applicable to which level, कौन सा रिलैक्सेशन है, इज हाईली इम्पॉसिबल. तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, फिर भी आपको लगता रहेगा कि यस आई हैव सफिशिएंट टाइम फ्रॉम अदर देन दिस 4 सब्जेक्ट्स, तो यू कैन रीड इट और याद भी कर सकते हो. मैं खुद याद नहीं करूंगा. ओके, चलो. नाउ सी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डील्स विथ, राइट डाउन, accounting standard, next point, accounting standards deals with RMPD analysis. Now what is R? R for recognition, M for measurement, P for presentation, D for disclosure. Now this is what is important. Now any accounting standard is either, A's are divided in 2 parts, either accounting or disclosure. Now in your syllabus, AS2 is there, accounting. AS3, cash flow statement. AS7, no, you don't have AS7. You have AS10, accounting. Accounting होगा तो there are RMPD analysis. Disclosure होगा तो only D analysis, disclosure. Okay. Now what is difference? Yes, I will tell you. Then you have S11, S12, S13, S16. All are accounting standard in group 1. In group 1, all accounting standard except S3. S3 tells you about cash flow statement, and this is a disclosure standard. See, accounting standards are divided in 2 parts. One is either accounting or disclosure. तो आपके सिलेबस में पूरा डिस्क्लोजर एक ही है, S3. वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, दैट यू हैव टू डिस्क्लोज. रिमेनिंग पार्ट इज बेटा पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है. नाउ व्हाट इज रिकॉग्निशन? रिकॉग्निशन मींस टू रिकॉर्ड द एंट्री. कि एंट्री को रिकॉर्ड कैसे किया जाए? टू रिकॉर्ड एंट्री इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एट व्हाट वैल्यू, वेयर is presentation, and disclosure, notes to accounts. What policy you are following? It is notes to accounts. So record entry, at what value, where, and notes to accounts. Recognition, measurement, presentation, disclosure. Recognition, measurement, presentation, disclosure. This is called as RMPD analysis. Okay. So accounting standard deals with RMPD analysis. Recognition means to record. M means measurement. At what value? That measurement basis you are already aware. Current cost, normally we are follower of historical cost. Then current cost. Then realizable value. And last one is present value. But we follow either historical cost or realizable value. We do not have current pricing recording or present value recording. Yes, we have present value in accounting standard 28 or leases. It's 19 mein present value is there. Okay. So realizable value is there in S2, cost or NRV, which is lower. So normally we are follower of NRV, maximum cost, then NRV, then current cost beta. Only in employee benefits there is current cost, and fourth one is present value. So measurement bases are there. Then presentation, where to present it, asset में, P&L में, कहाँ पे, या only notes to accounts में, and disclosure, which policy you are selecting.
So this talks about accounting standards. Okay. Now, do one thing. For first chapter in detail, for chapter number 1, because chapter number 1 हमें दिया ही नहीं गया है, so I will refer my recordings of chapter 1. तो मैं आपको बताता हूं चैप्टर 1 के लिए आप क्या करना. सो चैप्टर 2 ओवर, यूनिट 3, chapter 3 unit 1 over, chapter 2 completed, framework of financial statements. So now for chapter 1, recordings of, मैं आपको रिकॉर्डिंग बताता हूं. आई थिंक बैच 2 में बहुत बढ़िया बताया था मैंने चैप्टर 1, उसके बाद टाइम ही नहीं मिला. सो चैप्टर 1 सबसे भारी कौन से बैच में लिया था? यस, मैं आपको सिर्फ लिंक बता देता हूं कौन सी है. आपको मैं सिर्फ लिंक देता हूं. इंट्रोडक्शन टू एएस सीएस अंकित शाह. कौन से बैच में लिया था? बहुत बढ़िया. हाँ, एक बैच 2 में बहुत बढ़िया लिया था. एक 24 दिसंबर का दिखा रहा है, 11 मंथ्स एगो. और उससे भी बढ़िया आई थिंक बैच 2 में बहुत अच्छे से हुआ था. ओके, सो एक बार वो भी चेक कर लेना, बैच 2 या बैच 3 का. सो चैप्टर 1 आप लोग पुराना लेक्चर रेफर कीजिए. चैप्टर 1 में बहुत बढ़िया तरीके से दिया है. 2 आवर्स आपको देना पड़ेगा. सो चैप्टर 1 यू हैव टू वॉच माय प्रीवियस सेशन, बिकॉज इन दिस बैच आई एम गोइंग टू कवर मैक्सिमम पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस. सो चैप्टर 1 के लिए आप वो फॉलो कीजिए. और यस, ठीक है. सो आज के लिए काफी है आरएमपीडी एनालिसिस. सो बेटा S1 आई विल गिव यू. यस, बैच 2 का देखिए या बैच 4 का देखिए. ठीक है. सो बैच 1 का मत देखिए बेटा, बैच 1 बहुत डेंजरस थी. सो मेरा ही देखे ना लेक्चर. ओके, सो बैच 2 का देखिए या बैच 4 का देखिए, दोनों में से एक देख लेना. सो हम लोग उसको फॉलो कीजिए एंड ट्राई टू वॉच दैट सेशन फॉर चैप्टर 1. प्लीज write down all notes. In next chapter, in next session, I'm going to start with accounting standard 2. तो आज मैं आपको जल्दी छोड़ रहा हूँ बिकॉज चैप्टर 1 कवर नहीं किया है. 9-2 और यूनिट 1 कवर किया जो सिलेबस का पार्ट था. बाकी आपको रिकॉर्डिंग्स बहुत सारे देखने. आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, पर चैप्टर 2 को पहले प्रायोरिटी दीजिए. चैप्टर 1 आप बाद में ऑल सेशंस कंप्लीट होने के बाद 31 दिसंबर के पहले देख लीजिए. पर अभी फिलहाल you have to watch chapter number 1. You can record it, you can watch it afterwards, but first complete your chapter 2, accounting standard 2 of my past batch. Okay, so thank you. We will meet on Sunday morning. Sunday morning को इस बार तो Sunday morning को मिलेंगे और बहुत अच्छे से S2 पढ़ेंगे, past recorded lectures plus past examination questions. Thank you. यस, बंद कीजिए आज का.